Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Medibil Pro. So today we are going to start our 44th lecture in basic medical billing course. So as you guys know that this is the first lecture of 2024 and the new year started. So we have to see that what kind of a developments and different kind of things are going to happen in 2024 for medical billing. How AI is going to take part in medical billing and what are the positive and negative effects of AI in medical billing. We are just going to see all this kind of stuff in this lecture. Are we going to lose our jobs due to AI? Because there would be different kind of technologies interpreting and there would be different kind of things which are going to take part in place of humans. So we have to see that what kind of changes are going to happen in 2024 in medical billing or US healthcare system. So let's start our lecture. So future of medical billing in 2024 in USA healthcare. Okay, so this is the lecture number 44. Okay, so let's see that. I hope there would be developments in 2024. Trends in healthcare industry often point toward potential changes and advancements in medical billing and coding. Yes, 2024 के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाली हैं जो कि 2023 के अंदर नहीं थी. So we are just going to have different kind of a stuff, different kind of a technologies, different kind of a EHRs, electronic health record systems, softwares. Those are just going to revolutionize these kind of a things. Okay, so medical billing is going to have a lot of different technologies and developments in 2024. So here are some potential directions the field might take. So इस फील्ड के अंदर काफ़ी सारी जो डायरेक्शंस हो सकती हैं मीन्स कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं कुछ ऐसी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं कुछ ऐसे key points है आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब ऑल दोज काइंड ऑफ स्टफ इन दिस लेक्चर कि हम हमारी जॉब्स के ऊपर इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट्स वुड बी ऑन आर जॉब्स हमारी जॉब्स चली तो नहीं जाएंगी काफ़ी सारे व्यूअर्स ने इंडिया से पाकिस्तान से मुझे अप्रोच किया कि हाँ भी व्हाट वुड बी द इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एआई ऑन मेडिकल बिलिंग आई हैव ऑलरेडी मेड अ लेक्चर ऑन मेडिकल बिलिंग लाइक व्हाट वुड बी द इफेक्ट्स ऑफ एआई ऑन मेडिकल बिलिंग बट उसके अंदर सिर्फ ये चीज़ें थी कि हाँ भी क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या मीन्स ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स हैं क्या अपडेट्स होंगी जो कि हमारे एआई के अंदर काम मीन्स ये है कि हमारी मेडिकल बिलिंग के अंदर आएंगी जिससे ये है कि मेडिकल बिलिंग का जो डिपार्टमेंट होगा बेसिकली उसके ऊपर क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक है बट इन दिस लेक्चर वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस कि हाँ भी पॉजिटिव और उनके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे हमारी जॉब्स के ऊपर क्या इफेक्ट्स होंगे मेडिकल बिलिंग के ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे एआई के ओके सो सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ भी चेंजेस 2024 के अंदर क्या क्या होने वाली हैं सो उसके बाद फिर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स की तरफ जाएंगे व्हाट वुड बी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एआई ऑन मेडिकल बिलिंग ओके so future of medical billing in 2024 would be the first one automation and integration AI integration okay so accept further integration of artificial intelligence AI machine learning into medical billing and coding processes. Automation may streamline tasks such as coding, claim submission, and even preliminary audits for accuracy. Yes, AI is going to take part in different kind of things like जैसे हम claim manually बनाते हैं उसके अंदर charges ऐड करते हैं उसके अंदर means एक providers ऐड करना date of services blah 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 a lot of things are going to be added in claims so these claims are manually sent means हम sometimes paper mail के जरिए send करते हैं nowadays we are just going to use the electronic kind of things इलेक्ट्रॉनिकली हम इन क्लेम्स को सेंड करते हैं बट बनाने के लिए मैनुअल पावर भी चाहिए होती है ठीक है मैन पावर उसमें यह है कि हम खुद ही बैठ के इसके चार्जेस डाटा जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करते हैं उन क्लेम्स को फिर सेंड करते हैं बट in the near future nowadays this is going to happen that these kind of claims would be submitted by AI means ऐसे सॉफ्टवेयर्स होंगे ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे ये है कि हम डायरेक्टली हमें जस्ट हमने उनको ये है कि प्रोवाइड्स जो रिपोर्ट्स वगैरह होंगी वो ऑटोमेटिकली ही जैसे ही प्रोवाइडर ने रिपोर्ट सबमिट करनी है उसके बाद ये है कि एआई ऐसे सॉफ्टवेयर्स होंगे जो उन रिपोर्ट्स के अंदर से जो रिक्वायर्ड डाटा होगा उसको कोड भी कर देंगे कोड करने के बाद उसका क्लेम बना के इंश्योरेंस को वो सेंड भी कर देंगे ओके सो ये हो सकता है उसके बाद ये है कि काफ़ी सारी ऑडिट्स की जो चीज़ें होती हैं वो भी इसके अंदर स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी ओके इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो AI इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट बट वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस दैट काइंड ऑफ थिंग्स इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर ठीक है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स के ऊपर डिटेल्ड हमारा ओवरव्यू होगा ओके सो नेक्स्ट वन इज इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन डाटा एनालिटिक्स
ओके, इन 2024 मेडिकल बिलिंग के अंदर इंक्रीज एम्फेसिस होगा ऑन डेटा एनालिटिक्स। व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स और इसके अंदर क्या क्या मीन्स ये है कि चीज़ें आती हैं। द हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इंक्रीजिंगली लेवरेज डेटा एनालिटिक्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ऑप्टिमाइज कोडिंग एक्यूरेसी, डिटेक्ट fraud and improve overall billing efficiency. Yes, when we are just having a frauds like when a provider submit a claim like phantom claims, they are just going to add those kind of a things, those kind of a service which was not rendered previously, and they are just going to add those kind of a things in the claims that would be detected. ओके, अगर कोई वो बंडलिंग करते हैं या कुछ ऐसे सीपीटीज ऐड करते हैं जो मीन्स ये है कि सर्विसेज दी ही नहीं गई और उनको किया जाता है, फिर ये है कि हमारे पास डाटा एनालिटिक्स होगा कि हाँ भी कौन सी फैसिलिटी कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करती है और इसके क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं। कोई अगर फ्रॉड करता है तो वो भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, सो एआई या 2024 के अंदर इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जिससे ये है कि ईजिली उन फ्रॉड्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। ओके, और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे पैटर्न्स होंगे हमारे जो क्लेम सबमिशंस हैं या हम क्लेम्स के अंदर जो डिनाइल्स आ रहे होते हैं उनको हम पता लग जाए कि हाँ भी ये इंश्योरेंस अगर हम इसको इस क्लेम मॉडिफायर लगाकर या इसके साथ हम ये क्या कहते हैं डायग्नोसिस कोड अगर सबमिट कर रहे हैं तो ये डिनाई होते हैं। ठीक है, तो उन पैटर्न्स को हम इजीली ये है कि डिटेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट जो क्लेम्स हमने भेजने हैं उन क्लेम्स के ऊपर हमारे पास ये है कि हमारे पास थॉरली स्टडी होगी कि हाँ भी इन क्लेम्स को वी आर जस्ट नॉट गोइंग टू सेंड दीज काइंड ऑफ क्लेम्स विद दीज सीपीटीज एंड मॉडिफायर्स। ओके, या डायग्नोसिस कोड्स के साथ कोई जो मॉडिफायर लगा हुआ है वो मतलब हमने नहीं भेजने इस तरीके से। ओके, ताकि है कि हमारे क्लेम डिनाइड ना हो और उनकी जो पेमेंट्स हैं वो रिम्बर्समेंट जो है वो हमें मिलते रहें। ओके, सो नेक्स्ट इज टेली हेल्थ एंड रिमोट सर्विसेज कोडिंग। ठीक है, with the continued expansion of telehealth and remote healthcare services, coding systems might adapt to better accommodate and accurately represent these types of patient encounters. Yes, telehealth services means nowadays different kind of providers are also offering telehealth services because they are just staying at one place and providing their services रिमोटली। मीन्स वो रिमोटली दूर कहीं बैठकर वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं किसी एक कंट्री के अंदर बैठते हुए, मीन्स रहते हुए दूसरी कंट्री के पेशेंट्स को भी वो डील करते हैं with the help of internet, you can say that. Okay, ऑडियो वीडियो मीन्स ये कि उनकी कम्युनिकेशंस होती हैं रिमोटली बैठकर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इससे ये है कि काफ़ी ट्रैवलिंग की कॉस्ट बच जाती है, आपका टाइम सेव हो जाता है। इसके बाद अलावा और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिससे ये है कि ये टेली हेल्थ जो सर्विसेज हैं ये बहुत ही इफेक्टिव है नाउ डेज। ठीक है, इसके ऊपर भी आई हैव ऑलरेडी मेड अ लेक्चर अबाउट टेली हेल्थ सर्विसेज आर टेली मेडिसिन इन मेडिकल बिलिंग। यू कैन जस्ट वॉच दैट काइंड ऑफ लेक्चर इफ़ यू वांट to know what is telehealth or telemedicine in medical billing in a detailed view. Okay, so yes, telehealth services, these are also going to be impact a lot in 2024. And what would be the next one? Regulatory changes and compliance updates. Healthcare regulations are subject to frequent changes. As a result, medical billing and coding practices will need to continuously evolve to comply with update guidelines, standards and requirements. Yes, यू नो गाइस नो दैट कि एनुअली काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सीपीटीज चेंज हो रहे होते हैं, डायग्नोसिस कोड्स चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, उनके अंदर मीन्स ये काफ़ी मॉडिफिकेशन आ रही होती हैं, कुछ डिलीशंस होती हैं और कुछ अपडेशंस होती हैं, उसके अंदर काफ़ी सारी अपडेट्स आती हैं। सो इन ट्रेंड्स या इन रेगुलेटरी जो स्कीम्स होती हैं उनके साथ चलना बहुत ही ज़्यादा, उनको अपने आप को एक दूसरे के साथ मीन्स इन चीज़ों के साथ अपडेट रखना दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। In 2024 there would be different kind of situations where you just need to update yourself and get different kind of informations about procedures, diagnosis codes, modifiers, denials. So these would be the different kind of things which are going to happen in 2024. और इसके अलावा हर इंश्योरेंस की जो गाइडलाइंस हैं दीज गाइडलाइंस वुड बी आर गोइंग टू बी चेंज्ड। ओके, nowadays we just see that Medicare is going to change different kind of a plans. They BCBS, Blue Cross Blue Shield, they are also offering different kind of a plans as well. इसके अलावा जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं फेडरल हो गई वो उनके अंदर काफ़ी सारे जो अपडेट्स आ रही होती हैं, we need to memorize and we need to learn those kind of a things to go with the pace and go with the flow. Okay, and next we see its focus on cybersecurity. Yes, as more healthcare systems digitize patient records and billing information, there will likely be an increased focus on cybersecurity measures to protect sensitive patient data from cyber threats and breaches. Yes, you guys know that there are different kind of hackers in the world and they are just going to steal the patient's data from one place and they are just going to sell those kind of a data to another place. Okay, so as you guys know that cybersecurity is also going to take part in this one, and we are just going to focus on that kind of a thing as well. We need to save the patient's data, we need to save all those kind of informations which are
वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस और वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी। जाहिर सी बात है, जब एक बिलिंग कंपनी एक पेशेंट का डाटा एक प्लेस से, जाहिर सी बात है, अपने पास से इंश्योरेंस कंपनी को सेंड करती है और ये इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा होता है। सो इन ब्रीचेस को, इसके अंदर कोई हैकिंग ना हो जाए, पेशेंट का डाटा रिवील ना हो जाए उनकी, जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू HIPAA पॉलिसीज वी नीड टू सिक्योर द पेशेंट्स डाटा। सो दीज काइंड ऑफ डाटा मस्ट बी सिक्योर्ड। ओके, सो इनको सिक्योर करने के लिए इसके ऊपर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा 2024 के अंदर, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन 2024। Okay, next is interoperability and integration. Efforts to enhance interoperability between different healthcare systems and software platforms will likely continue. Seamless integration between electronic health records, billing systems, and other healthcare IT infrastructure can improve accuracy and efficiency in billing processes. Yes, काफ़ी सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनके ज़रिए हम एक दूसरे के साथ मीन्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लाइक देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स which are being used in medical billing companies, and these companies are just using these softwares to transfer different kind of patients data claims to from one place to another place, like from one entity to another entity, from one, like entity क्या है मीन्स एक मेडिकल बिलिंग कंपनी है, दे आर जस्ट बिहेविंग और दे आर जस्ट परफॉर्मिंग अंडर द प्रोवाइडर सर्विसेज। ठीक है, वो जितने भी प्रोवाइडर वही है कि उनको रिपोर्ट्स देते हैं या उनके लिए काम कर रहे होते हैं। सो दे आर जस्ट मेकिंग द क्लेम्स। ठीक है, क्लेम्स बना रहे हैं, उनको क्लेम्स को सबमिट कर रहे हैं, उन क्लेम्स की पेमेंट्स आ रही हैं, क्लेम्स की पेमेंट पोस्ट हो रही है पेशेंट्स के डाटा के अंदर। ठीक है, उससे सॉफ्टवेयर के अंदर। सो दीज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स नीड्स अपडेट्स, दीज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेबिलिटी। उनके अंदर काफ़ी सारी जो रेगुलेटरी चीज़ें चेंजेस होती हैं, उनके साथ ये है कि मुताबिकत होना, कंपेरेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो इसके अलावा ना सिर्फ दीज काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, रादर देन इसके साथ साथ और भी जितने भी प्रोसेस या जितने भी सॉफ्टवेयर्स वी आर जस्ट गोइंग टू यूज, सो दीज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ अपडेट्स, एंड yes, in 2024 these systems are being updated. Okay, जितनी जाहिर सी बात 2023 के अंदर जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं, एडवांसमेंट्स हुई हैं, 2024 के अंदर उससे ज़्यादा होने वाली हैं। ओके, so, efforts to enhance interoperability between different healthcare systems and software platforms will likely continue. Yes, ये जितने भी मैं दिया है कि सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो एफर्ट्स की जा रही हैं, उनकी जो ऑपरेबिलिटी होगी, ठीक है, इन प्लेटफॉर्म्स या सॉफ्टवेयर्स के अंदर उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, so next we have training and education. There might be an increased emphasis on training programs for medical billing and coding professionals to keep up with the technology's advancements, regulatory changes, and evolving best practices. Yes, there would be an increased, मीन्स ये कि एक जाहिर सी बात है, जिस तरीके से दुनिया इवॉल्व कर रही है, काफ़ी सारी चीज़ें जो न्यू आ रही हैं, जो पहले हम नहीं जानते थे, अब उन चीज़ों को जानते हैं, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट. So there, that's why we just need different kind of trainings. We need education, because after education and training we can just streamline those kind of things, and we can apply those kind of things in medical billing different processes. Okay, सो चीज़ों को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए हमें मेडिकल बिलिंग से रिलेटेड जितनी भी एजुकेशंस हैं, जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, वो हमें हासिल करना होंगी, हमें अपडेट्स हासिल करना होंगी कि what kind of updates are going to be done in 2024. We just need to adhere those kind of policies and those updates to be in the pace. Okay, so, value based care models. The shift toward value based care models that focus on patients' outcomes rather than the volume of services provided may influence how billing and coding are approached and reimbursed. Yes, we are just going to provide different kind of a value based services. Means ये depend नहीं करता कि यहाँ पे कितनी services दी गई हैं, depends ये है या important ये है कि हाँ पे आपने किस केयर से, किस वैल्यू के अंडर ये है कि वो सर्विस प्रोवाइड की गई है। ओके, उसके आउटकम्स क्या हैं, वी नीड टू फोकस ऑन द आउटकम्स ऑफ फॉर द पेशेंट सर्विसेज। मीन्स जितने भी पेशेंट को सर्विस दी जाए, उसे है कि पेशेंट्स ठीक हो जाएं, पेशेंट्स की जो बीमारी है या जो डायग्नोस किया गया था, जो प्रोसीजर परफॉर्म किए गए हैं, उससे ये है कि उनको एक तो पेमेंट्स कम देनी पड़े। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनसे जो क्लेम्स सेंड किए गए हैं, उनके जो डिनाइल्स हैं वो कम हों, पे प्रोवाइडर्स को रिइंबर्समेंट्स ठीक तरीके से मिलें। सो इस तरीके की जो चीज़ें हों, ये जो सारा साइकिल होता है वो अच्छे से परफॉर्म हो, अच्छे से चलता रहे, आया कि उसके अंदर काफ़ी डिनाइल्स हों, पेशेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बने, और इसके अलावा पेशेंट्स को क्या कहते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो भी नाकिस हों। दैट is not going to happen in 2024. Okay, we are just going to focus all those kind of a stuff that will be quite helpful for the patient outcomes. Okay, so these trends are based on the direction the healthcare industry has been moving in recent years, and while they offer potential insights,
The specifics of how these changes manifest in 2024 may vary. ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हम पहले 2023 के अंदर परफॉर्म करते रहे हैं वो वेरी करने वाली हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी एडवांसमेंट्स आने वाली हैं। यू गाइस नो दैट कि ये एआई का ज़माना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेट हो गई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो पहले मैनुअली मीन्स ये है कि मैन पावर के अंडर होती थी, अब वो काफ़ी सारी मशीन्स ने उनकी जगह ले ली है। सो we are just going to see the positive and negative effects of AI on medical billing in the next slide. Okay, medical billing and coding are essential components of healthcare administration, and staying updated on industry developments is crucial for professionals in this field. Yes, all those kind of changes, updates, rules, regulations, services means क्या क्या चीज़ें change हो रही हैं, we need to update ourselves with those kind of things, because we are just living in the world where every time there is a new update, so we have to be focused on those kind of updates and memorize those kind of updates as well to be in the pace with the world. Okay, so what are the positive and negative effects of AI on medical billing? Yes, are we going to lose our jobs? Maybe, may not be. Yes, let's see what we have in this lecture for this kind of a thing. ओके, सबसे पहले इसके देखते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ एआई ऑन मेडिकल बिलिंग के। यहाँ भी मेडिकल बिलिंग के अंदर जो पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। Efficiency and accuracy. Yes, AI can automate repetitive tasks involved in medical billing, such as coding and claim submissions. It can process large volumes of data faster and more accurately than manual methods, reducing errors and improving efficiency. यस, इससे ये है कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी कि हाँ भी जिस डाटा को हमने स्टोर करना है, जो हमने पेशेंट्स का डाटा सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करना है, अगर हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ठीक है, और those are just going to reveal in 2024 earlier later years. Okay, सो जैसे ही वो सिस्टम्स आएंगे, जो वो सॉफ्टवेयर्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली पेशेंट्स का जो डाटा है वो उससे क्लेम बनाएंगे, उनका डाटा ये है कि क्लेम के अंदर ऐड कर देंगे, जो जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है एक क्लेम बनाने के लिए, पेशेंट का डाटा, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ठीक है, उसके बाद प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद चार्जेस की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद डेट ऑफ सर्विस, रेंडरिंग प्रोवाइडर, रेफरिंग प्रोवाइडर, ऑर्डरिंग प्रोवाइडर, सो दीज काइंड ऑफ ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स will be automated, entered into a claim, and those claims will be sent to insurances. ओके, सो ये सारी चीज़ें इजीली हो जाएंगी, फास्टर हो जाएंगी। रादर ये है कि अगर कोई ह्यूमन बैठ के, जाहिर सी बात है, पेशेंट का डाटा ऐड करता है, दैट कैन वर्क far less than accurately or easily rather than the machines, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब कोई एक मशीन काम करती है, कोई कंप्यूटर काम करता है, दैट वुड बी क्वाइट फास्ट। ओके, सो after that, so these kind of things are going to happen, that this would be a great impact on medical billing, like we will be just having a great efficiency। हम एक दिन के अंदर बहुत ज़्यादा क्लेम्स बना सकते हैं, उनके ऊपर फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है कि हम एक्यूरेसी कर सकते हैं। एक मैन पावर, जाहिर सी बात है, ह्यूमन एरर्स भी होते हैं, बट machines are not going to make mistakes anymore. Okay, so these kind of things are going to happen in 2024. These would be the positive effect on medical billing. Streamline processes. By automating routine tasks, AI frees up time for billing professionals to focus on more complex issues and patient interactions. This streamlining can enhance productivity and reduce administrative burdens. Yes, जाहिर सी बात है, जो छोटे छोटे काम होते हैं या छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिनके ऊपर प्रोफेशनल्स को फोकस करना पड़ता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। सो इसलिए कह रहे हैं कि हाँ भी जो स्मॉल टास्क होंगे, जो सिंपल टास्क होंगे, जो जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन विद द काइंड ऑफ एआई मशीन्स, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो, ताकि ये है कि जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं जिनके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, जिनके ऊपर लाइक हम सपोज करें अपील्स करते हैं और अपील्स के डिस्प्यूट्स करते हैं, उसके बाद ये है कि उनके ऊपर फोकस करना होता है कि हाँ भी इसको किस तरीके से टैकल करना है, डिनाइल क्यों आया है। सो इस तरह के जो पेचीदा या कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं वो, ताकि वो प्रोफेशनल्स उनको देख सकें, और उससे जो पहले हमारे पास इजी या स्मॉल टास्क हैं जिनके ऊपर जाहिर सी बात है एक न्यू या फ्रेश को रखा जाता है, वहाँ पर यह है कि इजीली ये मशीन्स काम करें, ये सॉफ्टवेयर्स काम करें, जिससे यह है कि इजीली हमारे पास टाइम भी सेव हो जाए और हमारे पास एफिशिएंसी और एक्यूरेसी भी बढ़ जाए। So next we have cost saving. Yes, improved efficiency and accuracy in billing processes can potentially lead to cost saving for healthcare providers, insurers, and patients by reducing billing errors and minimizing administrative expenses. Yes, there would be different kind of a cost savings। जाहिर सी बात है, जब claims बनेंगे, ठीक है, machines ही सारा process करेंगी, okay, so then
we are not going to pay different kind of services to human power. Okay, and these kind of things can be saved, are quite saving money. Okay, improved efficiency हो जाएगी, accuracy भी हो जाएगी। और उसके accuracy means ये है कि उसके अंदर जब क्लेम्स बनाए जाएंगे उनके अंदर डिनाइल्स नहीं होंगे, उनके ऊपर वो जो ट्रेंड्स हम ऑलरेडी मशीन्स के अंदर स्टोर कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर कर चुके हैं कि यहाँ पे इस इंश्योरेंस को इन इन प्रोटोकॉल्स के या इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के ज़रिए हमने क्लेम सबमिट करना होता है। सो इससे ये है कि हमारा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक दिन के अंदर हम बहुत ज़्यादा क्लेम सेंड कर सकते हैं और रिम्बर्समेंट जो होंगी वो हमें ईजिली मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो इससे ये है कि एरर्स भी नहीं आएंगे मेडिकल बिलिंग के अंदर, हमारे जो कॉस्ट्स हैं जो लगती हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाएंगी। Predictive analytics and fraud detections. AI-driven analytics can identify patterns and trends in billing data, yes, aiding in fraud detection and preventing inappropriate or erroneous claims, ultimately safeguarding the integrity of the healthcare system. Yes, you guys know that we are just going to focus, इंसान काफ़ी सारी चीज़ें भूल सकते हैं बट machines are not going to forget any kind of a things if we have just stored those kind of a things in their AI or algorithms. ठीक है, जब उनके यहाँ algorithms के अंदर ये चीज़ें फिक्स कर जाती हैं, स्टोर कर जाती हैं, they are not going to forget those kind of a things, they always remember these kind of things. Okay, so इससे ये है कि हम किसी भी किस्म के frauds को डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई जो पैटर्न हम दोनों उसके अंदर ऐड किए हैं उनको वो हमेशा याद रखेंगे कि हाँ भी ये इंश्योरेंस को इस क्लेम के इस तरीके से जाना है, ये इंश्योरेंस प्राइमरी रखनी है, ये हमेशा सेकेंडरी होती है। ठीक है, इसके अंदर ये मेडिकल एडवांटेज प्लान्स हैं, इसके अंदर ये और काफ़ी सारे जितने भी प्लान्स होते हैं, सो ये वो प्लान्स होते हैं, ये फेडरल प्लान्स हैं, ये प्राइवेट प्लान्स हैं, इनके लिए ये प्रोटोकॉल्स हैं, इनकी ये पॉलिसीज़ हैं, इस स्टेट वाइज ये इनकी क्या कहते हैं सर्विसेज जो हैं ये हम उनको बिल कर सकते हैं, ये नहीं बिल कर सकते, मेडिकेट के अंदर पेशेंट को बिल नहीं किया जाता। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल। ओके, सो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हम डाटा के अंदर या मशीन्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं और इससे ये है कि हमारे जो जो पैटर्न्स होंगे वो उनको ये है कि फॉलो करेंगे और जो क्लेम्स बनेगा तो वो इजीली क्लीन क्लेम होगा और जब इंश्योरेंस को सेंड किया जाएगा तो हमें रिइंबर्समेंट इजीली उनकी मिल जाएंगी। ओके, सो नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द नेगेटिव इफेक्ट्स। ओके, यहाँ पे एआई के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं ऑन मेडिकल बिलिंग के अंदर। इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, जाहिर सी बात है मशीन्स को सॉफ्टवेयर्स को इम्प्लीमेंट करना उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, एजुकेशन चाहिए, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए उसको करने के लिए। ओके, इंटीग्रेटिंग एआई सिस्टम्स इनटू एग्जिस्टिंग बिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर may require substantial initial investments in technology, training, and system integration, which could be a barrier for smaller healthcare facilities. Yes, the facilities which are quite smaller, they are just going to face different kind of difficulties while implementing the AI in medical billing. Obsolete, you can say that are all infrastructure, but the healthcare facilities are the healthcare organizations which are bigger and having a tons of billions of revenue yearly. They are just going to focus on all this kind of stuff and they are just going to make efforts that AI can be implanted, or you can say that implement in different procedures or in different processes of medical billing. Okay, जाहिर सी बात है इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, एजुकेशन चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए बहुत ज़्यादा, ताकि यह है कि जो भी प्रोसेसेस हैं उनको हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, एजुकेशन लगेगी और ट्रेनिंग भी लगेगी। Next is job displacement concerns. Yes, this is the most asked question, burning question. You can say that in the new era. So as the new year started today, 2024, we are just going to have different kind of a stuff. कि हाँ भी, are we going to lose our jobs or not? What would be the effects of AI on our jobs? Okay, let's see. There are concerns about the displacement of jobs traditionally performed by billing and coding professionals. While AI can streamline processes, it might lead to the reduced need of certain administrative tools. Yes, ये administrative के जो कुछ tools होंगे उनके ऊपर अभी implement हो सकता है, but still we are just having a lot of power in the humans. Okay, काफ़ी सारे ह्यूमंस ये है कि अभी इस तरीके की कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि हाँ भी ह्यूमंस को रिप्लेस किया जाए और उसके लिए कि यहाँ पे एआई मशीन्स या ऐसे सॉफ्टवेयर्स हों जो ये सारे काम कर लेंगे। यस, कुछ इफ़ेक्ट्स होंगे बट अभी बहुत ज़्यादा देर है इन चीज़ों को स्पेसिफिकली मेडिकल बिलिंग के अंदर आने में कि हाँ भी मेडिकल बिलिंग के अंदर एआई जैसे ही इंटीग्रेट हो, इम्प्लीमेंट हो और उससे ये है कि ह्यूमंस जो हैं वो जॉब्स लूज़ करें। फाइनल रिव्यू हमेशा ह्यूमंस का ही होगा क्योंकि बिकॉज वी ह्यूमंस नो दैट मोर देन अबाउट द मशीन्स। बिकॉज कुछ हम जाहिर सी बात है हम जो चीज़ें मशीन्स के अंदर स्टोर करेंगे उन्होंने तो वही परफॉर्म करना है। ठीक है, बट
we just know that what kind of a things we need to store, what kind of a things we need to add into their system. ओके, और हमने कौन सी चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, और ट्रेंड्स जो बदल रहे होते हैं वो भी जाहिर सी बात है हमने ही अपडेट करने हैं. ओके. Next is data privacy and security risks. With increased reliance on AI systems to handle sensitive patient data, there is a heightened risk of data breaches or privacy violations if these systems are not adequately secured. Yes, patients का data हमें बहुत सा secure रखना हो जाता है, और लेकिन जब ये चीज़ें सारी AI में आ जाएंगी, लाइक ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर होंगी, और you guys know that when we are just going to have different kind of AI machines, ठीक है, वो सारा जो डाटा होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली ही डील हो रहा होगा, सो देयर कुड बी अ चांस ऑफ ब्रीचेस ऑफ हैकिंग. ठीक है, काफ़ी सारे हैकर्स जो है वो डाटा, ये है कि वो ब्रीच कर सकते हैं, उस डाटा को स्टील कर सकते हैं, और उस डाटा को का मिसयूज़ भी किया जा सकता है. सो ये AI का नेगेटिव इफेक्ट है कि हाँ भी इस तरह की चीज़ें आफ्टर दैट काइंड ऑफ थिंग हैपन हो सकती हैं. सो इससे बचने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी जो है, हमारे सिक्योरिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको ये है कि उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा. Next is dependency and technical issues. Relying heavily on AI for billing processes can create a dependency on technology. Technical glitches, system downtime, or errors in AI algorithms could disrupt billing operations and potentially impact revenue cycles. Yes, ज़ाहिर सी बात है, दीज काइंड ऑफ मशीन्स, जब मशीन काम करती है तो मशीन की भी केयर करना, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो उनके लिए भी हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, सो लाइक ये है कि कोई मशीन के अंदर कोई ख़राबी आई है, सो देन वी नीड द IT पर्सनल्स, IT प्रोफेशनल्स टू फिक्स दोज काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, एंड दे आर जस्ट गोइंग टू fix those kind of things physically. So we need the manpower as well to fix AI machines or the AI, you can say that things. Okay, so इसके अंदर काफ़ी सारे ग्लिचेस आ सकते हैं, एरर्स आ सकते हैं, और इसके अलावा कोई मशीन्स ख़राब हो सकती हैं. सो उनको फिक्स करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत होगी, बट ये सारे ग्लिचेस AI के आ सकते हैं इन मशीन्स. ओके, सो दीज वर द नेगेटिव इफेक्ट्स, द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन मेडिकल बिलिंग. यहाँ भी इस तरीके से मेडिकल बिलिंग के अंदर ये नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं. Next, we see its coding and interpretation challenges. Why AI can assist in coding, some medical cases may require nuanced judgment or context that AI algorithms might not fully capture. This could be lead to inaccuracies or incomplete coding. Yes, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं. मैं वही कह रहा था, जिस तरीके से हम काफ़ी सारी अपडेट्स पे किसी भी मशीन के अंदर, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जब तक ऐड नहीं करेंगे, so they are not going to perform on those kind of policies. So that's why we just need the human power, the manpower to think about that those kind of things. उन चीज़ों को सोचना है, उन चीज़ों को किस तरीके से हमने रिव्यू करना है. So the final review will be on the human power. Okay. Ethical concerns. There are ethical considerations regarding the use of AI in healthcare, including transparency in how AI algorithms might make billing decisions, ensuring fairness and preventing biases इन ऑटोमेटेड प्रोसेसेस. यस, काफ़ी सारे एथिकल कंसर्न्स हैं कि हाँ भी किस तरीके से वो बायसनेस शो करते हैं, किस तरीके से वो मेडिकल बिलिंग की जो डिसीजंस हैं उनको लेते हैं, इंश्योरिंग फेयरनेस, उनके अंदर फेयरनेस मीन्स ये शो करते हैं, और प्रिवेंटिंग बायसनेस इन ऑटोमेटेड प्रोसेसेस एज वेल. सो इस तरह की जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो हमारे AI के ऊपर इम्पैक्ट होने वाली हैं. ओके, इफ़ वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन AI, लाइक काफ़ी सारी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अगर फोकस करते हैं, सो इस तरह की चीज़ें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं. The integration of AI into medical billing offers various benefits in terms of efficiency, accuracy, and cost effectiveness. However, careful implementation, ongoing monitoring, and addressing potential challenges are crucial to maximizing the positive impacts while mitigating the negative consequences as well. So there would be different kind of things, like the positive ones and the negative ones as well, like what kind of things and what kind of things were done in previously 2023, and there are different kind of developments and advances which are going to happen in 2024. So we have just seen that different kind of things are going to happen in 2024. We just need to update ourselves with these kind of things. Okay, and what would be the effects or impacts of AI on medical billing? We have just seen that positive and negative effects as well. So we are just secured for now, but we don't know what is going to happen in the later time or in the future. So we hope for the best. And if you guys have any concerns or questions regarding the medical billing or medical coding, then you guys can let me know. I will get back to you as soon as possible. You can comment on this video as well. Okay, so for now, take care of yourself and of your family, and stay blessed and have a good time with your families.
See you inshallah in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.